Good morning, students. Welcome to Whichcom YouTube channel. So now, very soon, the answers will be displayed. So this is what our updated and latest information and authenticated information about the JEE Main 2021. Okay. So here already it is given display of answer key for challenges. Okay, so NTA will display provisional answer key of the questions of NTA website with a public notice issued with this effect on the website. So अभी रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने के बाद कहाँ चेक करना है और वो फाइनल है कि नहीं चेक कर लीजिए. So you can cross check whether the result is correct or not. Your answers are matching with this or not if you got any problem. So sometimes NTA will be wrong, sometimes you may be wrong. कभी कभी आप गलत हो सकते हैं, एनटीए भी गलत हो सकता है. सो फॉर दैट व्हाट विल डू, उनके लिए क्या करना है यहाँ चेक कर लीजिए. सो if public notice will be issued in this website provided here, jemain.nta.nic.in. Anyhow, I will be informing you about this. Okay, so key challenges. If you feel that there is a problem in any answers given by it, अगर प्रोविजनल की में आपको कोई गलत लगता है तो आपको क्या करना है, नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन पेमेंट ऑफ 200 पर क्वेश्चन चैलेंज्ड एज प्रोसेसिंग चार्जेस. जो भी क्वेश्चन आपका सही लग रहा है और उनका गलत लग रहा है तो आपको क्या करना है, 200 रुपये नॉन रिफंडेबल. दिस इज नॉन रिफंडेबल, इट विल नॉट बी गिवन बैक टू यू वेदर it is correct or not. The provisional answer key are likely to be displayed 2 to 3 days. So already 26th was the last exam, so today or tomorrow, today is February 28th, today or tomorrow they are going to display the key. Most probably today only they are going to display, and very soon. Okay, so if you are not subscribed my channel, kindly subscribe. अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे डिटेल्स बताएंगे आगे क्या प्रोसेस है. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फ्यूचर प्रोसेस ऑल्सो. So only paid challenges made using stipulated time through the link will be considered. So for that you will be given a link, on that you have to challenge, you have to send your challenges. So for that what you have to do, so उसके लिए सिर्फ की challenges के लिए एक लिंक देने वाला है. तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो टाइम दिया जाएगा उतने ही टाइम में, और उसके बाद challenges without justification evidence filled in any other medium other than the prescribed link will not be considered. Okay, so इसका मतलब है आपको सबसे पहले जो भी आपका आंसर गलत लग रहा है उसको सबसे बेटर और एविडेंस है एनसीईआरटी. सो आप रिजल्ट आते ही क्या रिजल्ट ये फाइनल है कि नहीं वो भी चेक करना है, क्या करना है उसके लिए भी बताने वाला हूँ. द रिजल्ट इट इज़ गोइंग टू बी डिस्प्लेड टुडे और टुमारो इज़ नॉट फाइनल एंड नॉट इवन फाइनल फॉर द एंटायर 2021. अभी जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट नहीं है. कब रिजल्ट आएगा क्या है वो भी मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ. सो ट्राई टू स्टे विद मी टिल लास्ट वीडियो. ओके, लास्ट ऑफ द वीडियो. सो ये अभी क्या होगा, जो चैलेंजेस आप भेजेंगे वो इस लिंक के माध्यम से भेजेंगे और साथ में जस्टिफिकेशन भी देंगे. वॉट एवर द डिस्प्ले रिजल्ट यू आर सेंडिंग द key changes challenges, that should be with evidence. The best evidence should be NCERT. So immediately after the result what you will do, try to search it in your support. If the NTA is wrong you have to show that as per the page number NCERT this is given and my answer is this, but your answer is this. So the NTA decision on the challenges shall be final and no further communication will be entertained. Okay, तो अगर आप सही भी हो सकते हैं, एनटीए अगर चाहता है तो उसको सपोर्ट करेगा, नहीं तो और जो अगर आपका आंसर सही है तब भी आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा. एनटीए विल नॉट इन्फॉर्म द कैंडिडेट इंडिविजुअली अबाउट देयर चैलेंजेस. सो यू हैव टू क्रॉस चेक. व्हेन यू विल क्रॉस चेक द सब्जेक्ट विल एग्जामिनर विल examine all challenges received, then the answer will be displayed and declared. So the again it will be displayed. When it will be displayed, the result will be compiled on the basis of final answer key. No grievances with regard to answer keys after decision of final. So today or tomorrow whatever we are going to get is only provisional key, that is not final key. तो फाइनल की आने के बाद फिर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते. तो जो भी करना है आपको 1-2 दिन का टाइम दिया जाएगा, वो दैट इज़ ऑल्सो हियर मेंशन्ड. So the evaluation of multiple choice question will be carried out using final answer key
and raw actual marks, so they are not going to give you rank. अभी rank नहीं आने वाला, सिर्फ आपको marks और percentile मिलेगा. ओके, सो रैंक कब आएगा वो भी बताने वाला हूँ, वो भी प्रूफ के साथ. ओके, evaluation of multiple choice question will be obtained by the candidate considered for the computation of result of JEE main April. Raw marks obtained by the candidate in different shift will be converted to NTA score. So you are not going to get the marks, you will get only percentile. Okay, so detailed procedure for compilation of score will be already it is there in the website, that is already it is explained. Okay, display of recorded responses, whatever you have answered that also they are going to give you. NTA will display the recorded response and question paper attempted by each candidate on NTA website prior to the declaration of result. The recorded response are likely to be displayed in 2 to 3 days. मतलब दो चीज़ें आएंगे, आपने क्या आंसर किया है, और दूसरा जो आपके इंडिविजुअल लॉगिन के थ्रू रहेगा. Whatever you have answered that you will get in the individual login, and there will be provisional answer key will also be displayed. Okay, so then compilation and display of result in the final. Okay, first session will be conducted in multi-shift. These are all simple one. Okay, see, since JEE main BR quiz will be conducted in main shift, here all India rank shall be complied and declared after conduct of JEE main May 2021. So you are not going to get your rank now, but yeah, what you will get and how you will do. See, no scorecard, rank card will be dispatched to the candidate, and the rank candidates are advised to download the score oblique rank card from the JEE mains website only. So you have to check your score and keep a printed of it. There shall be no provision re-evaluation, no correspondence in this regard will be sent. Okay, so only all India rank used for admission through the, so that all again I am going to tell you in the different video about the ranking and all authorities, how many IITs are there, how many NITs are there, that also I am going to inform you. So don't forget to subscribe my channel and share it to your friends. अभी हर चीज़ में मार्च में कब एग्ज़ाम कब अटेम्प्ट करना है वो सारा चीज़ें मैं बताने वाला हूँ. सो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर यू, सो ट्राई टू सब्सक्राइब and press bell icon and inform to all your friends about this channel and support me, so that I can support most of the students in a right manner by giving the right information from authenticated sources. Thank you, bye bye, see you. With the all the best for the result, and keep in contact with Vijchem, and join a Telegram channel of Vijchem, that is Vijchem Class 12th. Okay, thank you, bye bye.